Hello guys, welcome you all to the online classes by Mukesh sir. So today we are starting the topic sets of class 11th. The topic is common in both the applied mathematics and regular mathematics. So this video is for all the sections of maths, all the students having maths in either they are science stream, either they are having commerce stream, or either they are having humanities stream. This video will help you out. So let's start with the topic sets. This is a new topic in class 11th. We have not any prior topic in class 10th or class 9th. This is a new topic for you everyone, and it's a simple topic. So just have a look what are sets, how you have to use sets. So number one, what is set? Set is a well-defined collection of objects. Sets are usually denoted by capital letters like A, B, C, etc. So a set is what? Set is a well-defined collection of objects. Now the thing lies in this word only, well-defined, right? The set is the well-defined collection of objects. Well-defined means whatever you are defining, it should be well-defined. Just for example, I talk about example लेते कि set of natural numbers, set of whole numbers. तो ये well defined. Natural numbers, सबके लिए natural number starts from 1 and end to infinity. ऐसा there is no one who can say that natural number में zero भी include होता है. तो means the natural number is well defined for everyone. सबके लिए properly well defined है. That's why you can say that this is a set as all the elements are well defined. You cannot say कि set of good batsmen या top 10 batsmen in the world. तो top 10 batsmen किसी के लिए कोई और top 10 batsmen होंगे. Just for example, for me, top number one batsman of the country of the complete world is Sachin Tendulkar. But for another person, it may be Ricky Ponting, right? So in that way, this is not perfectly defined. This is not well defined. कि top 10 batsmen जो हैं वो well defined नहीं है सबके लिए. It can be differ from person to person. Therefore, it is not a well defined thing. Hence, it is not a set. So set is the collection of well defined objects, right? Well defined का जो objects का collection होगा, that will be sets. जैसे कोई बोल दे कि set of rivers in India, 10 rivers in India. अब 10 rivers में कोई सी भी 10 rivers का name लिख सकता है. It is not necessary कि everyone is writing Ganga, Yamuna, Saraswati. No, anyone can write any other names of the rivers of India. There are many rivers in India, right? So that will also be not a set. So set is the collection of well-defined object. This is the first and foremost basic जो definition है उसका meaning कि what is a set. So from now onwards you will term the set as कि set is the collection of well-defined objects. ठीक है, वेल डिफाइंड मीन्स दे शुड बी डिफाइंड सेम फॉर एवरीवन. सबके लिए वो चीज़ सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. सेट को जब भी आप डिनोट करेंगे तो दे विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. नेक्स्ट, मेंबर ऑफ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स. सेट के अंदर अब जो भी मेंबर्स आएंगे वो उसके एलिमेंट्स होंगे, राइट? जैसे अभी मैंने एंड दे विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC. दे विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC. जैसे अभी अपने रिवर का एग्जाम्पल लिया था, तो वी विल डिनोट दिस सेट बाय, just for example I am taking a river example. So A, this is my A set and this will be defined like this. All the rivers name will be written like this and you will use comma for that. ठीक है, so this will be the set कि all the river names lie inside this. They will be in the small letters. अगर आप कोई अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हो तो they will be denoted by small alphabets and they will be always lie between curly brackets or you can say braces. इनको ब्रेसेस भी बोला जाता है, इनको करली ब्रैकेट्स भी बोला जाता है. सेट में आप राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते. गॉट माई पॉइंट? दीज आर यूज फॉर क्लास इंटरवल्स या कोऑर्डिनेट्स, इनके लिए यूज़ करते थे हम लोग. नाउ फॉर सेट यू विल यूज दिस करली ब्रैकेट्स. लेट्स मूव फर्दर. एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. अब आई हैव टेकन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. So now you have to choose those natural numbers which are lesser than 10. So they will be 1, 2, 3, 4. So they will lie between these curly braces and will be denoted by a capital letter A. So capital A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is the set. So this is the definition of set. We have understood the definition of set and this is an example for set. Denote करेंगे capital letter से और जो elements होंगे उनको comma से separate करेंगे and they will always lie between a curly bracket or braces. Let's move further. If A is an element of set Z, now what is Z? Z is an integer. Then we write A, this is a symbol, this symbol denotes belongs to. Alright, this symbol is known as belongs to. That is A belongs to Z.
एंड अदरवाइज वी राइट ए, कैंसिल आउट कर दिया सिंबल को, दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू जेड. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब आपके पास ये एक सिंबल है, व्हाट दिस सिंबल इज, जस्ट मेक अ सी एंड पुट अ लाइन इन बिटवीन. ठीक है, तो बिलोंग्स टू जेड एंड ए नॉट बिलोंग्स टू जेड, दीज आर द टू सिंबल्स. ऑलराइट, नाउ सेकंड थिंग, फर्स्ट टॉपिक. अब सेट से और फर्दर ऑन चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में व्हाट यू विल हैव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स. नंबर वन, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म. दीज थ्री आर द नेम्स for the first thing. You will get the question by this name also, you can get question by this name also, this name also. Most importantly जो use होता है वो ये name use होता है, roster form. तो roster form, tabular form और listing form. And second one is set builder form. Okay, now let's start with the roster form. Roster form is in this elements are listed or separated by commas. ये जो हमने एक example लिया था, this is roster form, जिसमें आप एलिमेंट्स को यू कैन सेपरेट बाय कॉमास एंड इन द ब्रेसेस, विद इन द ब्रेसेस. तो लेट फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10. तो लेस देन 10 इवन नंबर्स कौन होंगे, 2 4 6 8. तो आई हैव सेपरेटेड देम बाय कॉमा एंड इन द करली ब्रैकेट्स, एंड दिस इज डिनोटेड बाय अ सेट E. ओके, तो whenever a set is being represented by a capital letter and all the elements are separated by comma and lie within the braces, then that set is known as in roster form. वो roster form का set होगा. Now there are some important points for this. In this form order of elements are listed is immaterial. It means कि आपने जिस भी order में इसको लिखा है that will not make any difference, right? Just for example, आप 2 4 6 8 को you can write like this also, 4 2 8 6. Okay, similarly, second point, in writing this form of set, in writing this form of elements is not repeated. ठीक है, whenever you are writing roster form, so you will not repeat any element. Just for example, set of letters in word school. We are having a word school. अब इस school second topic, second representation of set. तो second type of representation of set is set builder form, right? So what is set builder form? In this form, instead of listing all elements of a set, we list the property satisfied by all elements of the set. अभी हमने रोस्टर फॉर्म में क्या किया था, वी हैव लिस्टेड ऑल द एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड देम बाय द कॉमास. अब यहाँ पे वो नहीं करना, राइट? व्हाट वी हैव टू चेंज नाउ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स, अब सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे. एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखेंगे विच विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. कोई बाहर का एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस ए इज द सेट is equals to curly brackets. First of all, you will write this x double dots px. px denotes property, x denotes जो element की आप बात कर रहे हो, तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, in bracket close. Or you can write like this, x, in this step you can change this double dot to this single line, एक single straight line px. Now this double dots or this single line represent such that. इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग है सच दैट, कि x इज ए एलिमेंट सच दैट दिस प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय x, कि x ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है. सिमिलरली x इज एन एलिमेंट सच दैट प्रॉपर्टी फॉलो करता है x ये वाली, राइट? तो इट इज रीड एज a इज सेट ऑफ ऑल x, a इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x हैज अ प्रॉपर्टी p. तो आई हैव रिटन इन द स्टेटमेंट फॉर्म कि a is a set of all x such that x has the property px. Now symbol, this double dot or the single line stands for such that. Okay, so let's take an example for this. Set of all natural numbers lie between 5 and 13. तो 5 और 13 के बीच में मेरे को सारे नेचुरल नंबर्स लिखने. तो इफ आई गो बाय रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म से तो हम क्या करते हैं, 5 and 13 के बिटवीन. तो 5 and 13 आर नॉट इंक्लूडेड, तो इट विल बी 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इसको सेट बिल्डर में लिखना, तो व्हाट विल राइट, a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेकिंग अल्फाबेट एज x. आपने लिया है अल्फाबेट, जो लिया वो x है, सच दैट कि इस x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 6 से 12 तक. दैट्स व्हाई x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेसर देन इक्वल टू 12. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज आ रही है, एक तो नंबर यहां से यहां तक लाई करना चाहिए. अब ये नंबर 6 से 12 के बीच में तो 6.5 भी हो सकता है,
7.2 भी हो सकता है, बट वी हैव टू स्पेसिफाई हेयर ऑल्सो कि x इज वॉट, x इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन था कि x मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन x बिलोंग्स टू n. गॉट माई पॉइंट. तो इन दिस वे यू विल रिप्रेजेंट योर सेट बिल्डर फॉर्म. पहले आप एक अल्फाबेट स्पेसिफाई करेंगे, फिर सच दैट देन यू विल राइट द प्रॉपर्टी कि वो अल्फाबेट किस प्रॉपर्टी को लाई कर रहा है. एंड इसमें एक और प्रॉपर्टी आ रही थी कि इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि x इज अ नेचुरल नंबर. दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू. तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट. Next, some important points for this method also. This method is also known as rule method or property method. Now there are also second name for this method, rule method or property method, right? So you can expect the question from this method also by this name. The repetition of element is set does not affect the set. Again, repetition will not affect it. देखिए 1 2 3 you can write it as 1 1 2 3. तो repetition से set पे कोई effect नहीं पड़ेगा. Okay. Now just take an example. Roster form of set A. आपको एक set given है set builder form में. This set is given in set builder form. You have to convert this set in roster form, right? तो इसको आप roster form में convert. Alright, तो इसको roster form में convert करने के लिए क्या करेंगे? Roster form set builder form is given. Roster form में the element should be written by a comma. They should be separated by a comma, right? So I have started with this property, the x, where x is having this property कि x should satisfy this equation and x must be a real number. ये है आपके पास. तो अब आपको clearly एक equation visible है. तो I have started with that equation and used factorization method. अब मेरे को x की values निकालनी है, right? If I want to write answer in roster form, तो I want all the values of x. तो I have started with factorization method. तो splitting की है, इसकी जो splitting the middle term होता तो 5 is splitted in -3 and -2. Then take out the common and solve the brackets. Bracket जैसे solve करते तो you are getting x is equals to plus minus root 2 and x is equals to plus minus root 3. तो you have got 4 answers, root 2 minus root 2, root 3 minus root 3. तो you will write a is equals to root 2 minus root 2, root 3 minus root 3. यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल स्पेसिफाई नहीं करना होता, कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं करनी होती. दिस इज योर रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में ओनली एलिमेंट्स शुड बी देयर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, राइट. So in this way you can change a set builder form to a roster form. Now let us take another example. Now let us take second example. Now a set is given 2, 4, 8, 16, 32. Now it is given in roster form and you have to change it in set builder form. ठीक है. तो this is the conversion from roster to set builder form. तो roster से set builder में जाने के लिए you have to identify a property कि इनमें क्या property fulfill हो रही है जो सब elements fulfill कर दें. तो it is very obvious कि these all are the powers of 2. तो 2 raised to the power 1, 2, this is 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5. तो I can write this as like this. तो first of all you have to identify the which property is being used. कुछ भी property लग सकती है लेकिन property इन्हीं elements में fulfill होनी चाहिए, बाहर के कोई element में fulfill नहीं होनी चाहिए. Got my point? तो I have written my set as a is equals to bracket x such that x is equals to 2 raised to the power n. Okay. तो देयर योर n इज अ नेचुरल नंबर. आपका जो ये पावर होगी दैट शुड बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 आपकी पावर कहाँ से स्टार्ट हुई? नेचुरल नंबर से. और इसको स्पेसिफाई करने के लिए और इसको प्रिसाइज करने के लिए अपने आंसर को हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n. नाउ वैल्यू ऑफ n विल बी 1 से 5 के बीच में, और आप इसको और भी आगे स्पेसिफाई कर सकते हो n शुड बी अ नेचुरल नंबर सो दैट कोई इसको पॉइंट्स में ना ले ले. ठीक है. तो इसलिए ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा n शुड बी अ नेचुरल नंबर, तभी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा. ओके. तो इन दिस वे यू कैन चेंज अ सेट बिल्डर फॉर्म टू द रोस्टर फॉर्म और योर रोस्टर फॉर्म टू द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट. तो दिस इज द टॉपिक विच यू हैव टू which will help you out in doing exercise 1.1 of your NCERT textbook. So just go through that exercise and examples and share the problems with me. We can discuss out the problems. Thank you very much.